したか。この星の代表が計り知れないエネルギーを感じる。てめえがインベーダーの親玉か。素晴らしい。戦う前に名を聞いておこう。俺は暗黒盗賊団ダークマターの頭目であり、全宇宙の覇者ボロスというものだ。俺は趣味でじゃなくてプロのヒーローをやってる埼玉というものだ。埼玉。全宇宙の敗者が地球に何の用だか知らないが、よくも英士丸ごとぶっ壊してくれたな。何の用か。予言があったのだ。予言？それって。かつて俺は宇宙中を荒らし回っていた。しかし俺は強すぎた。やがて歯向かう者は誰一人としていなくなり、俺は退屈という名の苦痛を味わう羽目になった。そんな時にある占い師が俺に言った。遠く離れたこの星に俺と対等に戦い楽しませることができる者がいるとな。もう20年も前のことだ。ここまで来るのにどれほどの時間を要したか。手下どもはあの予言は一時的に俺を遠ざけるためのデマだったと思っているようだが、今確信した。さあ俺のせいに刺激を与えてくれ。そのために来たんだ。バカかお前。退屈な人生に刺激が欲しくて他の星を襲うなんて。Le voilà. C'est donc lui le représentant de cette planète. Je sens une énorme puissance émaner de son corps. C'est toi le chef des envahisseurs? Magnifique. Hein? Donne-moi ton nom avant de débuter ce combat. Je suis Boros, le seigneur de Dark Matter, la guilde des pillards de l'espace, et souverain de l'univers tout entier. Moi je joue au héros. En fait non. Je suis un héros professionnel, et je m'appelle Saitama. Saitama? Je sais pas ce qu'un seigneur de l'univers ou je sais pas quoi vient faire ici, mais tout ce que je sais c'est que t'aurais pas dû détruire la ville A. Ce que je viens faire ici, dis-tu? C'est une prophétie qui m'envoie. Sérieux? Quelle prophétie? Il y a bien longtemps, j'ai décidé de mettre l'espace tout entier à feu et à sang. Le problème, c'est que j'étais bien trop fort. Je suis passé ainsi de planète en planète sans jamais trouver d'adversaire à ma mesure, et me suis petit à petit retrouvé plongé dans l'ennui le plus total. C'est alors que j'ai rencontré un devin qui m'a dit la chose suivante. Sur cette lointaine planète, tu trouveras un homme capable de t'offrir un combat exaltant, celui que tu désespères tellement d'avoir. Il m'a annoncé cela il y a déjà 20 ans. 20 ans, c'est le temps qu'il m'a fallu pour enfin arriver jusqu'ici. Mes serviteurs étaient convaincus que ce devin cherchait simplement un moyen de me faire partir le plus loin possible. Mais désormais j'en suis sûr. Oui, c'est toi qui vas enfin stimuler mon existence. C'est toi la raison de ma venue. Tu serais pas un peu con? Tu détruis des planètes entières depuis 20 piges simplement parce que tu te fais chier? Walker,
इस प्लैनेट का सबसे काबिल वॉरियर। उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं। क्या तुम ही हो इन सब के बॉस? वंडरफुल। फाइट से पहले हम दोनों एक दूसरे के नाम जान लेते हैं। मैं एक पायरेट बैंड का लीडर हूं जिसका नाम है डार्क मैटर, और मैं यूनिवर्स का डोमिनेटर हूं। मेरा नाम है बोरो। मैं एक शौकिया हीरो हूं। मेरा मतलब है कि मैं एक प्रोफेशनल हीरो हूं और मेरा नाम है साइतामा। साइतामा। देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि यूनिवर्स का डिनोमिनेटर अर्थ से क्या चाहता है, मगर तुमने वाकई मेरे शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं दुनिया से क्या चाहता हूं? दरअसल एक प्रोफेसी थी। प्रोफेसी? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले मैं यूनिवर्स में घूमता था और अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत स्ट्रांग था। फिर ऐसी कोई चीज नहीं बची जो मेरा मुकाबला करती, और फिर मुझे सब कुछ पा लेने के बाद वाली बोरियत का एहसास हुआ। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि दूर दराज एक प्लैनेट पर कोई है जो मेरा मुकाबला कर सकता है, कोई है जो मेरी बैटल की ख्वाहिश को पूरा करेगा। ये बात है 20 साल पहले की। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी दूर से यहां आया हूं? मेरे लोग समझते हैं कि यह प्रोफेसी सिर्फ मुझे दूर भेजने के लिए थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि यह सच थी। आओ और मुझे अपने होने का यकीन दिलाओ, इसलिए मैं यहां आया हूं। क्या तुम वाकई बेवकूफ हो? तुम ऐसे ही जाकर किसी प्लेनेट पर अटैक नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। He's come. The finest warrior this planet has to offer. I can sense no limit to his energy. Are you the boss man of these invaders? Wonderful. Huh? Before we fight, let us exchange names. I lead the pirate band known as Dark Matter, and I am the dominator of the universe. My name is Boros. I'm a hero for fun. I mean, a real professional hero. And my name is Saitama. Saitama. Look, dude, I don't know what the denominator of the universe wants with Earth, but you sure did make a big mess out of City A. What I want with Earth. There exists a prophecy. Prophecy? What do you mean? I was once a traveler, exploring the universe, ravaging everything in sight. But I was too strong. Eventually, I found there were none left who could face me. I came to know the torment of utter, all-encompassing boredom. Then one day, a great seer told me, somewhere on a faraway planet, a being exists who is my match. One who could rekindle my passion for battle. That was nearly 20 years ago. Have you any concept of the distance I've traveled to get here? My men thought the prophecy was a ruse, a fairy tale made up to focus my attention and lure me away. But now I'm certain it was true. Come and give stimulation to my existence. That is why I am here. Are you an idiot? You can't just go around attacking other planets simply to liven up your boring little life. Dumating na siya.
Ang pinakamalakas na mandirigma ng planetang ito. Ramdam kong walang limitasyon ang enerhiya niya. Kung gano'n, ikaw ang boss ng mga alien? Nakakatuwa. Ha? Bago tayo lumaban, gusto kong magkakilala muna tayo. Ako ang pinuno ng grupong piratang mas kilala sa tawag na Dark Matter. Ako ang hari ng kalawakan. Boros ang pangalan ko. Isa naman akong bayaning... hindi pala. Isa akong profesional na bayani. Saitama ang pangalan ko. Saitama. Kung ikaw man ang hari ng kalawakan, hindi ko alam kung anong kailangan mo sa Earth. Pero sigurado akong winasak mo ang CTA. Anong kailangan ko, sir? Ang totoo, nagkaroon ng isang hula. Hula? Anong hula? Dati, nililibot ko ang buong kalawakan at winawasak ko ang lahat na makita ko. Pero masyado kong malakas. Hindi nagtagal. Wala nang natira na pwedeng makipaglaban sa akin. Dahil doon, nakaramdam ako ng walang katumbas at hindi may paliwanag na pagkabagot. Hanggang sa isang araw, isang manghuhulang nagsabi sa akin na sa isang malayong planeta, nabubuhay ang isang taong nagtataglay ng lakas na kapantay ng sa akin at mabuhay sa pagnanasa kong lumaban. 20 taon na nakakalipas simula noon. Alam mo ba kung gaano kalayong nilakbay ko para lang marating to? Ang akala ng mga tauhan ko, gawa-gawa lang ng manghuhulang propesiyang yon para magawa nila akong palayuin. Pero ngayon sigurado na ako. Kaya, halika na, bigyan mo ng saysay ang buhay ko. Dahil doon kaya nandito ako ngayon. Loko-loko ka ba? Di tamang basta ka nilang mga atake ng ibang planeta porke naiinip ka sa buhay mo.